हेलो फ्रेंड्स मु आपको स्वागत जनाऊँ लेस्ट्रीम एजुकेशन को चलतु आज आम बी एड फास्ट सेमिस्टर आईसीटी पेपर आम देखा आईसीटी देखो यूनिट 1 आज आम डिस्कस करवा आईसीटी कौन रही है आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी देखो तार जो कंटेंट गुड़िक रही आमर सेगुड़ा हूँ देखो आम ये टॉपिक कौन कौन पढ़ा देखी नि प्रथम तार कंटेंट गुड़ाक देखो फास्ट रही कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड रही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ए ब्रीफ हिस्ट्री थर्ड रही नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोर्थ रही etymological meaning of educational technology. Then achi aims and objectives of educational technology, aspects of educational technology, uses of educational technology, objectives of educational technology, scope of educational technology, information technology, concept of communication, elements of communication, types of communication, process of communication, classroom communication, introduction, barriers and facilitator of communication, barriers specific to classroom communication, instructional media concept and importance of ICT, need of ICT in education, ICT नीड पढ़ा तापर स्कोप ऑफ ICT टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन पढ़ा रिसर्च पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तापर ICT इन रिसर्च ICT इन इवैल्यूएशन ICT इन पब्लिकेशन ICT इन एडमिनिस्ट्रेशन एगुड़ा आम ये चैप्टर पढ़ा तो देखो फर्स्ट देखो तार रही कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखो इतने कौन रही ना एजुकेशन रही एजुकेशन इन द टेक्निकल सेंस रिफर्स टू दैट प्रोसेस बाय व्हिच सोसाइटी थ्रू इट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन deliberately transmits its cultural heritage to its young accumulated values knowledge and skills from one generation to another एथरे कौन देछि ना सूचना और जोगाजोग जो हमर टेक्नोलॉजी आईसीटी एथरे कौन कह जायछि ना जो वैषयिक जो दृष्टि शिक्षा जो थाए सही प्रक्रिया को कौन बुझाए सही प्रक्रिया को शिक्षा बुझाए जहाँ द्वारा कि कौन ना समाजर यार विभिन्न अनुष्ठान माध्यम जो चतुरतार सहित यार सांस्कृतिक ऐतिह्य को एक जुगरू सांस्कृतिक मूल्यबोध ज्ञान और कौशल को पठाई थाए आ कौन ना अन्य को कौन करि शिक्षा प्रायतः शिक्षण सहित समकक्ष भाव में विवेचना करें प्रकार जमीक बौद्धिक भावप्रवण संवेदनशील मोटर प्राप्त अभिज्ञता भाव में कहुई देखो ये टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज डेवलप विथ टू इम्पोर्टाट एम देखो टेक्नोलॉजी जो अच्छी एजुकेशन तार डेवलपमेंट टू इम्पोर्टाट एम्स अच्छी देखो कौन ना फास्ट हो टू मेक एजुकेशन मोर वाइडली अवेलेबल टू अर सेकेंड हो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज अवेलेबल देखो एथर कौन कहुई ना फास्ट पॉइंट होची ना शिक्षा को जो समस्त अधिक व्यापक करने कहुई सेकेंड पॉइंट कौन ना जो आम उपलब्ध शिक्षार गुण जो उन्नति तो सेटा आमको कहुई देखो जो आम टेक्नोलॉजी मीन्स कौन ना प्रजुक्तिविद्या देखो ये कौन देना टेक्नोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एज द इफर्ट्स मेड बाय पीपल टू सैटिस्फाई देयर मटेरियल वंस बाय वर्किंग ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इट ऑल स्टार्टेड विद द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ टूल्स टू वर्क ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट देम टू यूजफुल फॉर्म to satisfy human wants. The first person who made fire by sticking two stones was one of the earliest technologies. देखो ये कौन कहुई ना जो आम शारीरिक वस्तु पर जो कार्यकारी से जो वस्तु चाहिदा पूरण करने लोक मान द्वारा जो प्रयास भाव में टेक्नोलॉजी को बुझी हे जब मनुष्यर इच्छा को पूरण करने जमी शारीरिक वस्तु पर कार्य करने जो साधन गुड़िकर उद्भावन और व्यवहार सहित यह आरंभ होता प्रथम पथर जे दुई पथर आघात कर निआ लगे से होती किए ना सर्वप्रथम टेक्नोलॉजी किए ना जे फास्ट कौन करते ना दुई पथर आघात कर निआ लगे सी होती सर्वप्रथम टेक्नोलॉजी आमर नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट हो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हिस्ट्री देखो यहाँ देखो देखो ये कौन कहुई ना डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ए ब्रीफ हिस्ट्री देखो कहुई वी मे स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ इट इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इवेंट्स एज फॉलोज देखो ये कौन कहुई ना जो तीनोटी भिन्न गोष्ठी इटी को फॉलो करा जायछि देखंतु कौन फास्ट देखंतु 14th सेंचुरी देखंतु 14th सेंचुरी रे कौन होइछि ना ओरल इंस्ट्रक्शन वाज प्रिवेल्ड एट द इमीडिएट स्टेज एंड देन टू मैन्युस्क्रिप्ट इन द 15th सेंचुरी द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बुक वाज प्रिंटेड ऑन टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड ग्रामर इन द 16th सेंचुरी पीटर रामस इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट बुक इन हायर एजुकेशन देखंतु एथरे कौन कह जायछि ना जो 14th शताब्दी रे ना प्रारंभिक पर्याय रे परे मैन्युस्क्रिप्ट रे कौन करा जायछि ना मौखिक जो निर्देशनामा प्राधान्य विस्तार करा जायछि तापर कौन कहुई ना जो 15 शताब्दी में आमर जो धर्म और व्याकरण प्रसंग में मुद्रण कला विकसित होता आ 16 शताब्दी में पीटर राम्स जी उच्च शिक्षा से कौन करते ना पाठ्य पुस्तक प्रवर्तन करते तो नेक्स्ट देखो कौन अच्छी आमर 7th सेंचुरी देखो 7th सेंचुरी आमर कौन होना देखो इन द सेकेंड ग्रुप वी फिप इनटू द 17th सेंचुरी एंड हियर वी सी जॉन कॉमेंसन इंट्रोडक्शन टेक्स्ट बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ही प्रोड्यूस एन इलस्ट्रेटेड बुक इन 1657 Orwell's pictures J. Russia criticized the teaching of his days and condemned the liberal use of words by teachers. According to him, teaching process must be directed towards learners' curiosity,
child-centered education. Rousseau's theory was put into practice by postology in his object method. B based his instruction on perception. देखो एथेर कौन कह ना ना द्वितीय ग्रुप रे जो आम कौन ना 17तम जो शताब्दी जो 17th जो आम रोचे सेंचुरी तो से देखा और एठारे आम जो जन कमेनियन पाई पाठ्यपुस्तक उपस्थापना करूँ देखू से कौन ना जो आम देखते ये 1657 मसीह एक विचित्र पुस्तक प्रस्तुत करते जार ना कौन थे ना ऑफ स्क्रिप्ट जो जे रोसो समय शिक्षादान को समालोचना करते शिक्षक मान द्वारा कौन शब्दर उदार व्यवहार को निंदा करते अनुजाई शिक्षादान प्रक्रिया निश्चित भाव में शिक्षार्थी कौतूहल अर्थात शिशु केन्द्रिक शिक्षा को निर्देशित होता तापर पोस्टालोजी द्वारा जो ऑब्जेक्ट जो पद्धति से निर्देश को धारणा उपर आधार करते देखो मुझे लिखिनी थर्ड पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट हूँ कौन ना जॉन डेव जो अच्छा देखो से कौन कहते ना इंट्रोडक्शन साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ई थंडाई कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड पुट फॉरवर्ड लर्निंग थ्योरीज. The third group was considered as a period of First and Second World Wars. During the First World War, the testing movement started. Binet was the forefather of this movement. During the Second World War, the application of behavioral sciences to technique and learning. देखो एथेर कौन कहुई ना ना शिक्षा क्षेत्र में साइन पी पद्धति प्रवर्तन करते प्रथम और द्वितीय जो विश्वयुद्धर प्रथम विश्वयुद्ध समय परीक्षण आंदोलन आरंभ होता. बिनेट यही आंदोलन मुख्य पिता थे. द्वितीय विश्वयुद्ध समय शिक्षादान और शिक्षापी आचरण विज्ञान प्रयोग था. देखो इन 1925 रे देइचंती सैरनेल प्रेस रे एक्सपेरिमेंटेड विथ प्रोग्राम लर्निंग एथर कौन करे ना शिक्षण सहित परीक्षण करथिले. देखो अच्छी नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. देखो नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखो नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो अच्छी इन द 21st century every aspect of human life has undergone a thought change due to the increasing use of science and technology. We live in better houses, have better medical facilities, and travel in luxurious cars and Volvo buses, trains, and superfast jet planes. It cannot be denied that the application of science and technology has resulted in the tremendous improvement in quality of things. देखो एथरे कौन कह ना एथरे कौन ना एकविंश शताब्दी में कहुई विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर जो व्यवहार हेतु मानव जीवन में कौन प्रत्येक दिगरे पुंगानुपुंग परिवर्तन आसी. तो आम उन्नत घरे बास करूँ उन्नति चिकित्सा सुविधा अच्छी विलासपूर्ण कार आ भल्वो बस ट्रेन सुपरफास्ट जेट विमान में यात्रा करूँ. तो यह अस्वीकार करना जे कौन ना विज्ञान और वैषयिक जो ज्ञानर प्रयोग द्वारा जिनिसर गुण में अतुलनीय उन्नति घटी. विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर व्यवहार उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक उन्नति आनी. जमी उदाहरण देखो उदाहरण स्वरूप ना पुस्तक उत्पादन प्रिंटिंग प्रेस उद्भावन पूर्व प्रत्येक पुस्तक हस्तलिखन कर गोटे पुस्तक उत्पादन बहुत समय लगे किंतु प्रिंटिंग प्रेस रे उत्पादन को कम समय मध्य बहु संख्यक पुस्तक उत्पादन करने संभव कला. यही प्रकार बहु उत्पादन पुस्तक आनी जहाँ कौन ना अरिस्टोटल द्वारा किणा जाई परिबो केवल आ कौन ना विज्ञान और जो प्रजुति विद्या अच्छी से बहु उत्पादन चमत्कार प्रदर्शन करें. जदि मानव जीवन जब अधिकांश क्षेत्र में विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर प्रभाव अनुभव करे तथापि अनुष्ठानिक शिक्षार पद्धति और कौशल प्राक विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जुगार रही कौन होता है ना देखा जाए. तो नेक्स्ट पॉइंट आसतु देखा एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. देखो एथर कौन रही ना एजुकेशन जो अच्छे द टर्म एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप और टू न्यूरिश एजुकेयर मीन्स टू लीड आउट और टू ड्रॉ एजुकेयर आउट. एजुकेटर मीन्स द एक्ट ऑफ एजुकेशन टीचिंग और ट्रेनिंग. दस एजुकेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज. देखो ये कही ना शिक्षा शब्दटी तार लैटिन शिक्षाविद उत्पन्न होती पोषण करवा शिक्षाविद अर्थ हो कौन ना नेतृत्व नेबाक शिक्षाविद को शिक्षादान अर्थात शिक्षादान कि प्रशिक्षण कार्य यहपरि कौन शिक्षा हूँ नॉलेज टेक्नोलॉजी हासिल और प्रदान कर कार्य प्रदान कर कार्य. देखो टेक्नोलॉजी देखो टेक्नोलॉजी कौन अच्छी द टर्म टेक्नोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड टेक मीन्स डिटेक्टिव टेक्निक मीन्स आर्ट टेक्निक मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट्स लोगोज मीन्स साइंस ऑफ स्टडी. ये देखो जो कार्य और जो प्रक्रिया हमारे टेक्नोलॉजी अच्छी से कौन देखिए ना टेक्नोलॉजी शब्द हो ग्रीक चमत्कार टेक अर्थ डिटेक्टिव टेक्नोर अर्थ हो कला बा वैषयिक अर्थ हो डॉक्माइन ऑफ आर्ट. तो लोगो अर्थ हो कौन ना अध्ययन विज्ञान प्रजुक्ति विद्या अर्थ हो एक कला कि कौशल अध्ययन विज्ञान जहाँ शिल्पकला प्रायोगिक सुगंध सहित विज्ञान सहित जड़ित. देखो कौन देखिए ना टेक्नोलॉजी मीन्स मुझे कहते पूर्व साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल और ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग. देखो ये कौन हो जो आम रही प्रजुक्ति विद्या अर्थ हो ना एक कला कि कौशल अध्ययन विज्ञान जहाँ आम शिल्पकला प्रयोग सुगंध सहित विज्ञान सहित जड़ित. आ टेक्नोलॉजी हो कौन ना व्यावहारिक उद्देश्य ज्ञानर प्रयोग जपरी टेक्नोलॉजी हो यंत्र व्यवहार मानव उत्पादन उन्नति आनिबा एहीपरि टेक्नोलॉजी हो कौन ना अभिभक्त व्यक्ति नाड़ में विज्ञानर प्रयोग और समाज प्रजुक्ति विद्या हो
नूतन एवं कौशल विकास एक वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखो डेफिनिशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मे बी रफली डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस टू प्रैक्टिकल टास्क इन एजुकेशन एज टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस प्रैक्टिकल टास्क इन इंडस्ट्री। देखो देखो ये कहुई जो शिक्षागत प्रगतिविद्यार देखो प्रायतः व्याख्या कर शिक्षार व्यावहारिक कार्य विज्ञान जो ज्ञान अच्छी ज्ञानर व्यवस्थित प्रयोग हो कौन शिल्परी विज्ञान व्यावहारिक कार्यगुड़िकर ज्ञानर व्यवस्थित प्रयोग। देखो ये कौन कहुई एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक यूज टू एजुकेशन। ये किए कहते डॉक्टर बीपी लुला कहते से कहते जो शिक्षागत ज्ञान कौशल हो कौन ना वैज्ञानिक पद्धति एवं कौशलर प्रयोग। नेक्स्ट देखो गालब्रेथ को मतरे देखो इट आज द सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। से कहते व्यावहारिक कार्य जो वैज्ञानिक कि अन्य जो संगठित ज्ञानर व्यवस्थित प्रयोग भाव में कौन आम जो इटी अच्छी ताहा होची एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यह होची बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एम्स एट फैसिलिटेटिंग एंड इंप्रूविंग ह्यूमन लर्निंग। तब देखो इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर देखो फर्स्ट पॉइंट अच्छी टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड सिचुएशंस फॉर लर्निंग एंड टीचिंग those situations which keep in mind the objectives that are necessary for training. Second one is to modify the learner's environment by presentation of material, by arranging the different learning activities and by organizing the physical and social surroundings of the learners. देखो ये कौन कहुई ना आमर जो शिक्षा टेक्नोलॉजी तार उद्देश्य और उद्देश्य मानव को कौन ना सुगम तथा उन्नत करने कौन ना शिक्षागत ज्ञान कौशलर लक्ष्य हो कौन ना शिक्षागत ज्ञान कौशलर गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य गुड़िक हूँ देखो शिक्षा और शिक्षादान कौन ना उपयुक्त परिकल्पित परिस्थिति प्रदान करने अर्थात से परिस्थिति जहाँ मन रखे जमीक आवश्यक उद्देश्य गुड़िक सेमती तालीम देखो सामग्री उपस्थापना द्वारा विभिन्न शिक्षण कार्यकलापर व्यवस्था करी और शिक्षार्थी शारीरिक और सामाजिक परिवेश को संगठित कर शिक्षार्थी परिवेश को परिवर्तन करी थाए। तापर सेकेंड देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो शिक्षागत प्रजुक्तिर प्रकृति और गुण गुड़िक देखा। देखो कौन ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ए फास्ट ग्रोइंग डिसिप्लिन्स। देखो तार फर्स्ट पॉइंट हो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल साइंस फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक एसेट्रा। इट इज एसेंशियली ए प्रैक्टिकल डिसिप्लिन rather than a theoretical construct. Third point is it is a science of design development and application of audio visual equipment to the field of education. Fourth one is it locates the problems in education that provides remedial measures and ultimately aims at improving the educational system. देखो ये कौन कहुई ना शिक्षागत जो प्रजुक्तिविद्या एक द्रुत बढ़ुवा अनुशासन आचरण विधि विज्ञान भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि इत्यादि क्षेत्र में यह अग्रगति द्वारा प्रभावित हुए। यह एक कौन ना तत्वगत निर्माण अपेक्षा एक व्यवहारिक अनुशासन बा यह शिक्षा क्षेत्र में ऑडियो विजुअल उपकरण डिजाइन डेवलपमेंट विकास और प्रयोगर विज्ञान अटे। यह शिक्षा क्षेत्र में समस्या गुड़िक चिन्हट करे और प्रतिकार यह शिक्षा क्षेत्र में समस्या गुड़िक चिन्हट करे आ कौन ना प्रतिकार जो व्यवस्था जोगाई थाए और शेष में शिक्षा व्यवस्था उन्नति आने को लक्ष्य रखी थाए। आ कौन ना यह एक प्रयोग विज्ञान जो कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में जमीक अनुसंधान और अनुसंधान मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान आचरण विज्ञान इंजीनियरिंग शारीरिक विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग कराए। आ कौन ना शिक्षादान को वैज्ञानिक ऑब्जेक्टिव जमी सरल सरलीकृत और आकर्षणीय करने गुरुत्वपूर्ण ग्रहण करें कि ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें। नेक्स्ट देखो 6 देखो एसेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज 3 मेजर एसेप्ट्स। देखो कौन अच्छी तार फर्स्ट अच्छी इनपुट अच्छी प्रोसेस अच्छी आउटपुट अच्छी। देखो देखो इनपुट कौन देखो इनपुट होची इन इन्वॉल्व्स द एंटायरिंग बिहेवियर द लर्नर्स इट इंक्लूड्स प्रीवियस अचीवमेंट abilities and level of motivation. Second one is it is concerned with a comprehension level of the learner. Third one is it involves the skill of teaching and awareness of teaching and training methods. Fourth one is it is concerned with the availability of teaching aids and skill in using the teaching skill. The second देखो process देखो teaching learning process देखो it involves the means and device of learning experience. First one देखो to generate situation for presenting the subject matter systematically. Second one is to select and use appropriate teaching strategy and tactics for desired learning structure. Third one is to employ appropriate teaching aids and desired behavior change.
Fourth one is to identify and use suitable communication technique used for the comprehension of the subject matter. The output देखो, it includes mainly terminal behavior of the learner. First one is to identify the characteristic of content. Second one is to clarify the objective achieved through the content. Third one is to analyze the stimuli. Fourth one is to determine the characteristic of student and their desired activities. तापर देखंतु एटा सब देखि देले तारो तापर देखंतु look at this picture देखंतु the detailed description of three aspects देखंतु ए जो three aspects हमें कहिले बुझिले in the content matter of educational technology the relation between input process and output can be made clear through the diagrammatic representation देखंतु एथरे कोन को जाय छि ना देखंतु एटा पिक्चर देखंतु इनपुट रे हमर कोन कोन रहउची जेमति कि इनपुट रे हमर इंफॉर्मेशन रहउची स्टूडेंट्स रहउचंती टीचर्स रहउचंती रिसोर्सेस रहउचंती सिस्टम जो प्रोसेस हमर रहउची टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेटा होची हमर सिस्टम देन देखंतु आउटपुट कोन ना आउटपुट होची एजुकेटेड आ स्टूडेंट्स रहउचंती एंड टीचर्स रहउचंती देखंतु इनपुट जो हमर इंफॉर्मेशन कोन होय इंफॉर्मेशन फासे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तापरे आउटपुट जाय कि एजुकेटेड आ स्टूडेंट मानकर एंड टीचर्स ऊपर होय देखंतु components of education technology देखंतु ये तो वाला मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग नेक्स्ट देखंतु components of educational technology देखंतु टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन देखंतु एतरे कोन रहउची देखंतु हमर लर्निंग रहउची लर्निंग स्टाइल रहउची सेकंड वन इज टीचिंग स्ट्रेटजी देखंतु लर्निंग स्टाइल जो अछि से देखंतु तार आछि टेक्नोलॉजी देखंतु एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी तार चारोटी भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि ऑब्जेक्टिव्स रहउची टीचिंग स्ट्रेटजी रहउची रिसोर्स जनरेशन रहउची आ लर्निंग स्टाइल रहउची तो एमानकर देखंतु जो टीचिंग हमर रहउची स्ट्रेटजी आको तीन भाग रे विभक्त करा जायछि जे सेंटर्ड आउ इंटरैक्टिव और टीचर सेंटर्ड आउ ता सहित सेंटर्ड टाको करा जायछि सेंटर्ड आउ स्टूडेंट लर्नर जो ता सहित जोड़ा जायछि टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन तबे देखंतु हमर जो रिसोर्स अछि जनरेशन तो सी होछि प्रोजेक्टेड अछि वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एड कंप्यूटर्स नॉन प्रोजेक्टेड एड्स तो ये सब रहउछि तापर लर्निंग जो स्टाइल रहउछि लर्निंग स्टाइल रे हमर रहउछि इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप डायनामिक ये सब टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन रे रहउछि लर्निंग स्टाइल रो ती ये देखंतु ये कोन ने तांकर भितरे तांकर सहित लिंक रहउछि तो ये थिला कोन हमर कंपोनेंट्स ऑफ educational technology देखंतु educational technology generally consists of four parts देखंतु first one देखंतु predetermined objectives second one is teaching strategies third one is resource generation fourth one is learning style next देखंतु uses of educational technology देखंतु educational technology रो हमें यूज केमिति करबा देखंतु शिक्षादान कौशल उत्साह उच्च उत्पादन और कोन शैली ऊपर निर्भरशील शिक्षण प्रक्रिया कोन ना उन्नति आनिबारे सहायता करे एवं यह अधिक उद्देश्यमूलक एवं चमत्कारी होई जाय देखंतु तार फर्स्ट पॉइंट देखंतु it helps in improving teaching learning process and makes it more purposeful and meaningful second one is देखंतु it helps to maintain and improve the standards of mass education by the use of teaching and programmed instruction materials तापर देखंतु the correspondence education can be made more effective by the use of radio television tape recorder and programmed instruction देखंतु इतरे कोन कह जाय छी ना शिक्षादान जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो शिक्षादान एवं प्रोग्राम होइतिबा निर्देशनामा व्यवहार करी जेमति जन शिक्षार मानको बजाय रखिबा एवं उन्नति करिबारे कोन करे सहायता करे आ कोन थर्ड देखंतु रेडियो टेलीविजन टेप रेकॉर्डर एवं प्रोग्राम्ड निर्देशनामा व्यवहार करी संवादपत्र शिक्षा अधिक प्रभावशाली होई पारिबो तापर देखंतु नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखंतु एतरे कोन कह जाय छी ना देखंतु McKenzie and others stated the following objectives keeping the student as focal point देखंतु पॉइंट उडिया देखंतु the need to reach out to the maximum number of students to reach out to them with an improved range of learning materials to provide opportunities for independent study देखंतु तार केते बडे पॉइंट देछि देखंतु हम देखले students as focal point उडे देखंतु कोन ना हिल्लार्ड जसम स्टेड at the following as objective keeping the teacher in view second one is objectives of ET education technology at micro level objectives in terms of board education goal objectives of ET at micro level objectives of specific classroom teaching next देखंतु approaches to the realization of objectives देखंतु according to educationists teacher management research organizations governments policy makers and customer service and used to realize ET objectives देखंतु एथरे कोन कहै छी ना शिक्षाविद को अनुଯାयी कोन ना शिक्षक परिचालना पूर्ण संगठन जो सरकारी नीति निर्माता एवं ग्राहक सेवा उद्देश्य को कोन ना वास्तव रूप देबा पई व्यवहृत होई थाए एहा शिक्षाविद को अनुଯାयी मतरे फर्स्ट पॉइंट देखंतु तारो teachers देखंतु in order to realize the objective teachers need to identify the importance scope and advantages of educational technology secondary देखंतु develop understanding about selection preparing and use of
ऑडियो विजुअल एड्स देखो एथरे कोन कह जाय ना शिक्षक माने उद्देश्य गुडी को हासिल करिया को शिक्षक माने को इटीर गुरुत्व परिसर एवं सुविधा चिन्हट करिबा आवश्यक करंती आ कोन ना विजुअल सहायता रे चयन प्रस्तुति एवं व्यवहार विषय रे डेभलप करंती प्रोग्राम एवं शिक्षादान जेमती मॉडल गठन किबा प्रस्तुति विषय रे कोन ना सचेतन विकास करंती सेकंड पॉइंट देखो सेकंड पॉइंट हमर जो मैनेजमेंट अछि मैनेजमेंट रे कोन होय देखो जो परिचालन हमर इटी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उद्देश्य परिचालन को विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा जोगाइबा पई आवश्यक करथंती आ कोन ना विभिन्न उपकरण गुडी को सजाई थाए जेपरि शिक्षक को उपयुक्त पर्याय तालीम प्रदान करंती थर्ड रे देखो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देखो जो अनुसंधान संगठन देखो अनुसंधान संगठन पसंद करंती जेमती हमर एनसीईआरटी सीआईटी एसआईटी ईएमआरसी ये कोन ना आंकर जो रिसर्च अछि फलाफल ऊपर आधार करी विभिन्न ऑडियो विजुअल यंत्रपाती प्रस्तुत करबा आवश्यक आ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो व्यवहार विषय रे नियमित प्रचार आ कोन ना शिक्षक मानकु सेवा तालीम रे संगठित करी थांती शिक्षक मानकु ट्रेनिंग प्रदान करै थांती फोर्थ पॉइंट देखंतु गवर्नमेंट अछि जो हमर सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार पर्याप्त यत्न एवं आग्रह नेबा उचित विद्यालय रे बारंबार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी व्यवहार विषय रे आ कोन ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यंत्रपाती उत्पादन को उत्साहित करी थांती नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट अछि यूजर्स एंड बेनिफिशियरी और कस्टमर्स नीड टू देखो एथरे कोन रही ना उपभोक्ता एवं हिताधिकारी किंबा ग्राहक मानकर व्यवहार को उत्साहित करबा आवश्यक करंती जेमति कि दैछि वेलकम एंड एनकरेज द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड दैछि अक्वायर एंड यूज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू डेवलप सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज थर्ड देखो सो रिमार्केबल प्रोग्रेस इन देयर चूजन एरियाज देखो एथरे कोन दैछि ना स्वयं लिमि दक्षता विकास पई इटिर ज्ञान हासिल करबा आवश्यक व्यवहार करबा आवश्यक सेमानकर जो मनोनीत क्षेत्र रे उल्लेखनीय अग्रगति को देखिबा अछि तापर देखंतु कोन 6 पॉइंट पॉलिसी प्लानर को ना टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्लानर्स देखंतु फर्स्ट पॉइंट तारे देखंतु टेक हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द मॉडर्न पॉलिसीज सेकंड देखंतु फ्रीक्वेंट चेंजेस मस्ट बी मेड इन यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिंग ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट नेशंस टू सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी must be used in both urban and rural places देखंतु एथरे कोन कह जाय छी ना योजनाकारी जो उद्देश्य को हृदयंगम करिया पई आधुनिक नीति गठन एवं कार्यकारी करिया पई अंतर्जातीय संगठन रो सहाय्य नेबा आवश्यक कोन ना निजस्व अनुभूति एवं विकसित राष्ट्र रो अभिज्ञता को आधार करी टेक्नोलॉजी रो व्यवहार बारंबार परिवर्तन हेबा आवश्यक आ कोन ना टेक्नोलॉजी रो सेवा उभय शहरांचल एवं ग्रामांचल रे व्यवहृत हेबा जरूरी नेक्स्ट देखंतु हमर स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखंतु एतरे कोन रही छी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशन सिस्टम वी कैन हार्डली डिटरमाइन कैलकुलेटिवली द स्कोप ऑफ इट from function point of view of ranges from the most concrete educational process to the most abstract and subtle one देखंतु एतरे कोन कह जाय छी ना शिक्षागत प्रयुक्ति विद्या जो शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आनी कोन ना अत्यधिक कंक्रीट शिक्षागत प्रक्रिया ठारू आरंभ करी सबुठारू अवक्षय एवं सूक्ष्म पर्यंत परिसर जेमती कार्य दृष्टिकोण देखंतु परिसर को हमें क्वचित निर्णय करि परिबा प्राय समस्त जो गुरुत्वपूर्ण कार्यकलाप रे शिक्षादान नाम रे एवं शिक्षा क्षेत्र रे समस्त पर्याय रे नियोजित होई परिबे जेमती लुइस एइटन को अनुसार कोन कह जाय छी ना हे तीनोटी व्यापक धारे विकसित होई छी कोन से गुडे ना साधारणतः से माने मास निर्देशक व्यक्तिगत शिक्षण एवं गोष्ठी लिविंग चलो देखिए फर्स्ट पॉइंट डिटरमिनेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखंतु एथरे कोन देछि ना शिक्षागत लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्णय और तार परिचय देखिए कोन देछि ता देरे देखंतु इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सॉफ्टवेयर एसेट्स ऑफ इट कंट्रीब्यूट इन दिस एरिया देखंतु एथरे कोन देछि ना शिक्षागत लक्ष्य एवं उद्देश्य चिन्हट करबा को चेष्टा करे एजुकेशन टेक्नोलॉजी रो जो सॉफ्टवेयर दिगो ए क्षेत्र रे अवदान रो लोक किबा छात्र मानकर आवश्यकता एवं आकांक्षा उपरे आधारकारी करा जाय थाए आ कोन एही शिक्षागत उद्देश्य गुडी को आचरणगत शब्द रे परिणत होई थाए नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट पॉइंट देखंतु analysis of the process of teaching learning देखंतु लर्निंग ने कोन ना एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज a large number of functions to perform it analyzes the teaching process variables phases of teaching level of teaching and determines the principles of teaching b देखंतु it also suggests maximum of teaching studies the concepts of learning theories of learning relation between teaching and learning एथरे कोन कह जाय छी ना देखो शिक्षादान मते जो शिक्षण संपर्क थियोरी गुडी समस्त दिग गुडी विभिन्न प्रकार कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करे जहा कि कोन ना शिक्षक प्रशिक्षण रो क्षेत्र देखंतु तापर देखंतु एरिया ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग देखंतु शिक्षक प्रशिक्षण रो क्षेत्र देखंतु ते कोन दैछि ना देयर इज अ मच स्कोप ऑफ इट इन द एरिया ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग the new innovations such as micro teaching simulated teaching academic gaming systems approach classroom
इंटरेक्शंस देखंतु एथरे कोन देछि ना शिक्षक प्रशिक्षण रे एटीर बहुत परिसर अछि शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र रे जेमति माइक्रो टीचिंग कहली सिमुले शिक्षादान एकेडमिक गेम सिस्टम श्रेणी गृह पारस्परिक सहित तांकर अछि नेक्स्ट देखंतु एरिया ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्टिव देखंतु एरिया ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्टिव देखंतु पाठ्यक्रम निर्माण क्षेत्र देखंतु एथरे कोन ना एकेडमिक क्षेत्र पाठ्यक्रम निर्माण रे समाजर लोकमानक परिवर्तन आवश्यकता अनुଯାयी विशेष करी जेमति भारत बड़ी विकासशील देश मानकरे विकसित राष्ट्र पाठ्यक्रम सहित गति करिवा एवं नियमित संशोधन आवश्यक करंती नेक्स्ट देखंतु 5 पॉइंट डेवलपिंग रिसोर्सेस देखंतु एथरे कोन देछि ना देखंतु विकासमूलक उत्साह गुड़िक देखंतु धार्य लक्ष्य परिकल्पित पाठ्यक्रम उभय मानव संबल और वस्तु संबल को दृष्टि रखी विकास हेबा आवश्यक देखंतु शिक्षागत प्रजुक्तिविद्या विभिन्न टीएलएम एवं वेब उपकरण गुड़िकर विकास सहित जड़ित नेक्स्ट देखंतु डेवलप्स इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन सर्विसेज देखंतु सूचना उत्स गुड़िकर विकास देखंतु समस्त व्यक्ति विशेष विशेषज्ञ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୂଚନା ସମାଜରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ସାକ୍ଷରତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କଳନା ବିଶେଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଛି डेवलप्स इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन सर्विस देखंतु देखंतु एथरे कोन निर्देशावली सेवा गुड़िक विकास करे देखंतु शिक्षण शैली शांति एवं कैश व्यक्तिगत छात्रक भिन्न भिन्न निर्देशावली सेवा जेमति कैट वीडियो डिक्स निर्देशनामा मॉडल आ बुझिबा शक्ति जेमति निर्दिष्ट स्तर रे निर्देश से परि 7 पॉइंट देखंतु डेवलप लर्निंग एनवायरनमेंट देखंतु शिक्षण परिवेश रो विकास देखंतु इंटरैक्टिव निर्देशात्मक प्रजुक्ति विद्या एक स्वतंत्र परिवेश सिमुलेशन किंबा डाटाबेस सृष्टि करिवारे व्यवहृत होई परिबो जहा छात्रक द्वारा परिचालित होई परिबो नेक्स्ट पॉइंट देखंतु एथरे कोन देछि ना डेवलप्स पैसिव इंस्ट्रक्शंस सर्विस देखंतु एथरे कोन देछि ना द नेक्स्ट बुक इज द ट्रेडिशनल पैसिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम प्रोजेक्शन मीडिया स्लाइड्स फिल्म स्ट्रिप्स ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज एंड पिक्चर्स एटसेट्रा कैन बी यूज्ड देखंतु 9 पॉइंट देखंतु डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन देखंतु एथरे कोन रहि ना एंड इंस्ट्रक्शनल teleconferencing via radio television and computer which allow teachers to exchange experience develop curricula and coordinate educational programs among number of schools in a district 10 point देखंतु develops teaching storage देखंतु it helps the teacher in selection and development of suitable teaching strategies etc develops testing and diagnosis mechanism देखंतु it helps मतलब educational technology helps the teacher to have appropriate control over the process of teaching and learning by developing suitable tools and devices for continuous evaluation of the process and products of teaching and learning next देखंतु information technology देखंतु networking of computer gave birth to information technology IT Sansware 2000 defined IT as the use of hardware and software for efficient management of information storage retrieval processing communication diffusion and sharing of information for social economic and cultural optimization the IT lead to the development of websites देखंतु एथरे कोन कोआ जाय छी ना आम जो रही नेटवर्किंग सूचना प्रजुक्ति विद्या को जन्म देला सानसोवार किए 2000 मसीह सूचना संरक्षण आउ पुनरुद्धार जोगाजोग प्रक्रियाकरण विस्तार एवं सामाजिक अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में सूचना बाटिया पे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर व्यवहार भाव में आईटी को व्याख्या करा जाए तो आईटी वेबसाइट गुड़िकर विकास को जमी आगे नहीं था जपरी सरकारी कॉर्पोरेट सेक्टर शिक्षानुष्ठान गुड़िकर से वेबसाइट रे सूचना अपलोड करने को दर्शाई यही डाटा कौन ना ईमेल शॉपिंग इत्यादि सुविधा जोगाई थाए नेक्स्ट देखो तार देखो हिस्ट्री रही पॉइंट गुड़िक नॉलेज एक्सप्लोजन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज रिट्राइवल फास्ट देखिए चलतु तार हिस्ट्री देखा चलतु देखो फास्ट हिस्ट्री कौन रही ना 1000 वर्ष धरी गणना को साहाय्य करने उपकरण गुड़िकर व्यवहार होता बोधे प्रारंभ में एक जमी स्टिक आकार में ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी आरंभ कौन ना आंटीसेक्टा जंत्र शैली गोटे सर्वप्रथम जनाशुना यांत्रिक गोटे उद्भावन होता कंप्यूटर भाव में विवेचना कराए जहाँ जमी सर्वप्रथम जनाशुना जमी गियर मेकानिजम प्रथम शताब्दी पर्यंत जमी यूरोप में तुलनात्मक गियर उपकरण गुड़िक उत्पन्न हो नाला एवं कौन ना 4टी मौलिक आरिथमेटिकल ऑपरेशन करने को सक्षम प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित होता जमीक इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर गुड़िक रिले किंबा बल्ब व्यवहार कर 1940 दशक आरंभ में देखा लगे 1941 कौन ना समाप्त होता इलेक्ट्रोमेकानिकल जूस Z3 विश्व वर्ल्ड प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एवं प्रथम यंत्र आधुनिक मानक द्वारा जहाँ संपूर्ण गणना मेसीन भाव में विवेचना करा नेक्स्ट देखो नॉलेज एक्सप्लोजन देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ କମ୍ୟୁଟିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଇଡି କୁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୂଳ ସଂଗଠନ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂଗଠନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକୀକୃତ କରିବା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆପ୍ ଟାଇମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ ତଥ୍ୟ ଏକ ସର୍ ହୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଚ୍ ଆଜ୍ କ୍ଲୋଜର୍ସ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ punched tape and a long strip of paper on which data was represented by a series of holes, a technology now obsolete. Next देखंतु हमर retrieval रहिछि देखंतु the term of data and information. The term data and information are not a synonymous. Anything stored is data, but it only becomes information when it is organized and presented meaningfully. Most of the world's digital data is unstructured and stored in a variety of different physical formats, even within a single organization. तापरे देखंतु ethical perspective देखंतु एतरे कोन रहिछि देखंतु The field of information ethics was established by mathematician Norbert Wiener in the 1940s. Some of the ethical issues associated with the use of information technology include देखंतु तार पॉइंट गुडी कोन रहिछि देखंतु breaches of copyright by those downloading files stored without the permission of the copyright holders, employers monitoring their employees' emails and other internet uses on unsolicited emails एसबू रही वेबसाइट इंस्टॉलिंग कुकीज और स्पेवेयर टू मॉनिटर यूजर ऑनलाइन एक्टिविटी देखंतु एथरे कोन कह जायछि देखंतु सूचना नैतिकता क्षेत्र 1940 दशक रे कोन गणित नोर्बर्ट विनर मतरे देखंतु द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला कोन ना सूचना प्रजुक्तिर व्यवहार सहित जड़ित केतेक नैतिक प्रसंग अंतर्भुक्त करे जेपरि कॉपीराइट धारकଙ୍କ बिना अनुमति रे गच्छित फाइल गुडी को डाउनलोड करूतबा व्यक्तिଙ୍କ द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन नियुक्तिदाता सेमानଙ୍କ कर्मचारीଙ୍କ ईमेल एवं अन्य इंटरनेट व्यवहारकारीଙ୍କ अनालोचित ईमेल गुडी को ऑनलाइन डाटाबेस वेबसाइट गुडी को संस्थापना करूतबा हैकर्स किंबा एक उपभोक्तांकर जेमति ऑनलाइन एक्टिविटीज ऊपर नजर रखिया पई गुप्तचर वेयर रखा जाय थिला। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु concept of communication देखंतु रहिछि देखंतु education with its co-related देखंतु education with its co-related activities of teaching and learning involves communication as well as recapitual interaction between the teacher and pupils a channel of realizing it देखंतु एठी कोन कह जायछि ना हमर जो शिक्षा एही जो शिक्षण एवं शिक्षण संबंधी जो कार्यकलाप सहित जोगाजोग करिबा शिक्षक एवं शिक्षयित्री मानक मध्यरे जेमति एहा मध्य हृदयंगम करिबा जेमति कार्यकलाप को उद्देश्यमूलक जोगाजोग करिबा ए सब रहिछि। नेक्स्ट देखंतु definition देखंतु the word communication has been derived from the Latin word communis meaning common give and take or mutual sharing. Hence communication is having common experience with people. The following are some of the widely accepted definition of communication देखंतु फर्स्ट देखंतु तार पॉइंट गुडी Chester I. Bernard देखंतु viewed communication as the means by which people are linked together in an organization to achieve a common purpose. Next देखंतु according to Anthony F. Grassa, communication is an interpersonal process in which verbal symbols, words, sentence, etc. non-verbal symbols, etc. Next देखंतु elements of communication देखंतु elements of communication देखंतु it is necessary to understand the elements of communication in order to learn about communication models and network देखंतु फर्स्ट देखंतु communication context देखंतु एटी जोगाजोग मॉडल एवं नेटवर्क विषय रे अधिक जानिया पे जोगाजोग जो ये गुडी को कम्युनिकेशन गुडी को तार मॉडल जेमति नेटवर्क तेउडा सब कोन करा जाय ना बुझिबा आवश्यक देखंतु फर्स्ट पॉइंट तार देखंतु केतोडे पॉइंट अछन चलंतु देखितबा तापर हम ताको डिस्क्राइब करिया देखंतु फर्स्ट पॉइंट होची कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट सेकंड होची सोर्स कम्युनिकेटर्स थर्ड वन इज रिसीवर डेस्टिनेशन फोर्थ इज मैसेज फिफ्थ इज सिंबल सिक्स्थ चैनल 7 एनकोडिंग 8 डिकोडिंग 9 फीडबैक 10 नॉइज तो फर्स्ट देखंतु तांगर जो जोगाजोग अछि हमर कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट तो समस्त परिवेश ऊपर जथा जेमति शारीरिक परिवेश एवं श्रेणी गृह पार्टी किंबा सराउंडिंग देखंतु तापर हमर रहिछि कोन देखंतु सोर्स कम्युनिकेटर्स देखंतु सोर्स कम्युनिकेटर रे हमर कोन रहिछि देखंतु जेमति सामाजिक परिवेश जथा शिक्षक एवं छात्रक मध्य रे संपर्क जहा जो जेमति रहिछि जेमति देखंतु कॉल शीट
Shannon calls it a sender transmitter which operates the message in some way to produce a signal suitable for transmission over the channel. देखो third point देखो receiver destination. देखो एते रहछि कोन a person who interprets the message receiver performs the inverse operation of that done by the transmitter reconstructing the message from the signal. Destination is the personal thing for whom the message is intended. देखो fourth is देखो messages. Message देखो मेसेज रे कोन रही ना हमर जो रही वार्ता जो लैटिन वर्ड जो मीटर अर्थ होची कोन ना पठाइबा जा मौखिक सम्मानजनक प्रतीक अंगभंगी सूचक गतिविधि चित्र किंबा उत्स द्वारा पठा जाइतिबा शब्दर एक सेट देखो मेसेज इज फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मीटर मीन्स टू सेंड ए सेट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स गेस्चर्स cues moments figures of words sent by the source. Fifth number रे देखो अछि हमर सिंबल सिंबल को ए सिंबल इज समथिंग दैट डोनेट्स एन आइडिया और फैक्ट और ऑब्जेक्टिव एटसेट्रा दे कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल इन ए स्पीच वर्ड आर द सिंबल्स एथरे कोन कहै छै ना देखंतु एक प्रतीक होउची कोन ना एक जिनिस जहा एक धारणा बा तथ्य बा ऑब्जेक्टिव इत्यादि को सूचित करि थाए तापर देखंतु नेक्स्ट देखंतु चैनल चैनल ले कोन अछि ना हमर फॉर Shannon it is merely the medium used to transmit the signal from transmitter to receiver. Channels are sense of perception including visual auditory जेमति हमर visual sight auditory hearing tactile touch gesture taste and olfactory smell. Next point देखंतु हमर 7 point रे अछि कोन ना encoding कोन ना encoding is a process of using symbol to express the idea or feelings. This called ciphering a message. 8 point देखंतु decoding देखंतु कोन ना it is the process by which the receiver converts the message symbol sent by the receiver. This is called deciphering, which involves understanding and interpretation of the message sent. Feedback kor hoichi na it is the response a receiver gives to sender as a result of sender's message. Noise kono na noise hoichi noise is anything that distorts the message. It can be external or internal to the source or receiver. Next देखंतु characteristics of communication देखंतु एते कोन होइछि communication is a global phenomena. All human beings including animals have their own ways of communication. देखंतु तार केते point देखंतु it is a process with some purpose. Second point, it is a social interaction in which idea, knowledge, opinions, etc. are exchanged between two or more persons. Third is it is a universal process. It occurs everywhere. It is a continuous phenomenon. And last one is it can be intentional or unintentional. Next देखंतु हमर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखंतु टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखंतु एटी देछि कोन ना देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक 1 to 1 1 to many many to 1 many to many देखंतु फर्स्ट देखंतु हमर 1 to 1 अछि देखंतु पिक्चर देखंतु गोटे देछि तापर देखंतु गोटे रु अधिक देछि 1 to many गोटे रु अधिक रहिछि जोडी की तापर देखंतु हमर कोन ना many to many बहुत दूर बहुत हमर रहिछि तापर many to 1 बहुत रु जणे रहिछि देखंतु एटा बुझंतु ना सिंगल चैनल प्रेजेंटेशन may help when the material is in simple to grasp but when the material to be communicated is complex the use of multiple channel is better. There are basically three types of communication. These are देखंतु there are basically three types of communication. These are देखंतु face to face जोटा कि हमर speaking और listening. Second one is writing reading देखंतु. Third one is visualizing observing. देखंतु first देखंतु face to face जो हमर speaking and listening देखंतु. In this type of communication interaction is face to face as in the case of listening to a lecture. जेतबे हम गोटे लेक्चर थारु सुनी थाउ किछि माने स्टडी हमको टीचिंग देला किछि सुनी थाउ सेटा कोन हमर face to face with the an important character of this is to eye contact. This type of communication is found to be very effective because the listener here can ask questions, clarify doubts, and derive emotional satisfaction. Because of this, it is also known as interpersonal. This type of communication occurs in meetings, seminars, conference, classroom, etc. Next, देखंतु हमरो writing and reading देउ देखंतु. In this type of communication, the decoder is physically separated from the encoder all the time, and yet the decoder is able to enjoy and appreciate the feelings of the author. However, its drawback are that immediate doubts cannot be cleared, and there is no scope of know the facial expression of both encoder and decoder. This type of communication occurs reading newspaper, magazine, book, etc. Visualizing, observing the third point. In this type of communication, the person is physically separated from the communicator and yet is able to feel the impact as in films and television. The same is true in dramatization, where facial expressions and gestures produce a great impact. तार देखंतु merit of this communication देखंतु एरो merit रहिछि कोन कोन ना we can save time and money, possibility for person touch, immediate doubt clarification, can maintain friendly relation, prominence of messages can be made clear thought actions, easy to evaluate, possibility for flexibility, teacher with speaking talent flourishes, helps in making an impact through personal touch. Next देखंतु demerits देखंतु एरो demerits देखंतु
There may not be any possibility to record the information. Receiver may not be serious about the message. Possibility for misinterpretation of message if it is not clear. Generation gap may lead to destruction of message send status of either the sender or receiver may influence the communication. तो यह थिला आपण मानकर जो आईसीटी फर्स्ट बीएड फर्स्ट सेमिस्टर आईसीटी पेपर आईसीटी रो पेपर यूनिट 1 रो किछि पार्ट तो आई होप आपण मानको भलो लागिथिबो लाइक शेयर कमेंट करिया भी जमारी भूलिबेनी जदि आपण माने आरो पार्ट 2 देखिया को चाहुचंती तो लाइक शेयर कमेंट करंतु जदि आपण नुआ आछथि चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फल रे यार पार्ट 2 आपण आसानी से पाई परिबे थैंक यू सो मच कीप वाचिंग।